मेरा नाम तो इदया, कहीं ना मिस्टेक कर रहा हूँ। नेटिव चेन्नई में सैदापेट। मेरा जॉब पुलिसमैन। पुलिसमैन तो देखने में नहीं दिखेगा। मैं स्ट्रीट रेसर हूँ। स्ट्रीट रेस करेगा, कौन कौन रेस चलाते हैं, कौन कौन बाइक चलाते हैं, जो बाइक चलाते हैं वो भी स्ट्रीट रेसर है। समझ में आ रहा ना भाई? कौन बाइक अच्छा चला रहे हैं, दिल में सोचना है मैं एक रेसर हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। पैसे के लिए नहीं चलाता, फन के लिए चलाता, ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए चलाता, वही तो रेसर बनता है। पैसा के रेसर वो अलग, मोटो जीपी वो अलग है ना। मैं बहुत छोटा में सीख गया, उसका मार मार लेके उधर मज़ा करेगा। बाइक में ग्लव, छोटा बच्चा में ग्लव, बाइक 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 बाइक। आई मीन 11th स्टडी कर रहा हूँ, तभी तो मेरा पापा मुझे बाइक लेकर देते हैं, शाइन, होंडा शाइन। उसी में तो मैं सुबह सीखा रेस करने के लिए। उतना भी स्पीड नहीं जाएगा, लेकिन मुझे वो बाइक बहुत बड़ा है, वो 11th का टाइम में बहुत बड़ा है, इसलिए ऐसा है तो बाइक मिला हुआ है मुझे। एक रिलेशन है बाइक में, मैं भी एक रिलेशन है यार। वो मिशन नहीं, उसके ऊपर है। तुम कितना बाइक को लव करते हो उतना वो लव करेगा। तुम नहीं देगा तो वो नहीं देखेगा। मेरा भाई है वो, मेरा भाई है। बिकॉज एक एग्जाम में स्टार्ट नहीं होगा समटाइम्स में, स्टार्ट आवड़ा करके बोलेगा तो एक 2 किक में 3 किक स्टार्ट हो जाएगा। तभी तो देखने में बोलेगा क्या है बाइक का साथ बात कर रहा है। नहीं, मेरे भाई का साथ बात कर रहा हूँ यार मैं, तुम्हें पता है। अब तुम बाइक चला रहे हैं, अब तुम बाइक चला के बोल के बाइक मज़ा फील है यार, एमटी तो बहुत स्मूथ है, फीलिंग के बहुत अच्छा लग रहा है बोलते, तब क्या आएगा सोचने के कान में, अब भी बाइक लेना, अब भी चलाना है, अब भी रेस मारना है, अब भी कट मारना, विदाउट ब्रेकिंग जाना है, सब सूझेगा। तभी तो क्या हुआ, एक आर होते तुंडल क्यूरोसिटी, तभी तो दिल में आ रहा है बाइक लेना बाइक लेना बाइक लेना बाइक लेना। जो भी कर सकता बाइक के लिए महीना कम जा रहा है, मंथली सैलरी उसे सिर्फ 10,000 लेगा वो सैलरी, लेकिन बाइक 3 लाख का बाइक रहेगा। 10,000 सैलरी लेकिन बाइक 3 लाख का रहेगा। वो तो लव है बाइक का ऊपर, तो वो तो लव है। कितना भी तुम गिरो मरो, लेकिन बाइक का लव नहीं छोड़ेगा वो। बोलेंगे तो बहुत डिफरेंट टाइप है यार। वो तो स्मॉल गैप में जिगजैग से जाएगा, वो तो पुलिंग बोलते हैं। उसमें तो उसको मज़ा मिलेगा, लेकिन मार भी मिलेगा। वो भी स्ट्रीट रेसिंग है, ट्रैफिक में जाएगा, वो को बेट में चलेगा, पैसा में चलेगा, ये सिग्नल से वो सिग्नल, और ये लोकेशन से वो लोकेशन कोड फंस जाएगा। बस स्नैप पीछे एक लोग बैठेगा, वो लोग अब तुम एक टीम मैं एक टीम, मेरा वाला टीम आपका पीछे बैठेगा, तुम्हारा वाला टीम मेरे पीछे बैठेगा। कौन ज़्यादा बेंड मारता है और ब्रेक नहीं पकड़ेगा, लेकिन गियर कट करेगा, गियर कट करने में गाड़ी मार के स्टॉप होएगा, उसीलिए वो तो विदाउट ब्रेकिंग। मेरा फ्रेंड का फ्रेंड है दिंडीवनम, वो दिंडीवनम, उसका नाम सही नहीं पता है, मेरा फ्रेंड का फ्रेंड है वो पल्सर 200 रखा था, पल्सर 200 रखा के दिंडीवनम चेन्नई आएगा, वो बाईपास में मार ले। उनका रेसिंग तो बहुत रैश ड्राइविंग करता है। कुत्ता डॉग बीच में आ गया, मार के लुढ़क के बहुत मार पड़ गया उसको, स्पॉट आउट हो गया। मैं पुलिस होने के पहले ये सब नहीं सुधरेगा, तभी मैं चलाया हूँ स्ट्रीट रेसिंग में, तो भी चलाया हूँ, लेकिन इसके बाद हमारा लाइफ तो डिफरेंट है, रेस छोड़ दिया। लेकिन अभी भी मेरा बाइक देखे मॉडिफाइड में रहेगा, रेस का लुक में रहेगा, लुक वो ब्लेड नहीं जाएगा। Yeah, I am Naveen. I'm working in Swiggy for past 3 years, and I'm married, and I have a child. She's doing 5th standard. I am a big Ajit fan, and a very very big Ajit fan. And he loves bike. I too loves bike very much. Even sometime when I went lonely in bike in somewhere in highways, I speak to bike. Something like, "Are you tired? Let me stop." Like that, I used to speak when I went lonely. 2005. I was worked in some company. The owner says, drop me in Gindi.
That time my age is somewhat 15 to 16. I'm doing 10th, I think so. I don't know how to drive the bike. I said, okay, come. He asked me, do you know how to drive? Sir, I know. Then he took me to the Gindi and give the bike to me and he went. That's the first time I was started and I took the bike. Within first gear, second gear, I dropped the bike. And I again started it and fell down on the second time also and fell down third time and the fourth time I have picked it. Oh, this is the way we have to drive and picked it and I came back home. If I walk in an office, I have to see the manager or owner will watch me. Hey, do the job, do the job. I don't like that job. I want to be freelancer. Freelancer means no one should question me. I do my job and I go. Oil is the heart of vehicle. Oil is the main part of the vehicle. That means heart. In human being, we say heart is the main. If heart stops, we die. Like that, there is no oil, the bike dies. So if like that, if any puncture happens, we will lift the bike in the puncture shop and we will ask for a lift only to the Swiggy persons because he knows why I am waiting. So he will help me or he will tell me, just give the food, sir. I will just give it to the customer, like that. So bike, it's very close to me. Wherever I go, it helps me to drop my daughter in school. I'm using bike only to drop and to pick up. Wherever I have to take my family to the relations house or neighbors functions, anything, we used to go in bike. I'm tying the bag my Swiggy bag at backside. So I always take my daughter in front. She tells always you're having a bag in the backside, so I can't able to sit comfortably. That's her question. And my wife and my daughter will fight when they are coming in bike because they will not have enough space. I just go into the tank. I was sitting in tank, but also they will fight, and they both enjoy when I am driving the bike. And always I prefer bike. If I'm good also, I can able to buy a car. I have money also. I never. From the beginning, I told you no. From 2007, when I bought a bike, from that time till now, I love bike. Wife number 1 to wife number 70, and then I'll talk to my real wife. I am into food processing, and 30 years I've been in Krishnagiri. Krishnagiri is a hub for food processing, and over a period of time I was feeling bored in the evening, so I started collecting bikes and restoring them. And I had 4 technicians working with me. They all got into bikes, and we started pairing up into pairs and started doing these bikes and restoring them, and every evening it kept us occupied. I rode a bike first time, I think when I was in 11th or 12th standard. I owned my first bike when I was 22. My dad would never buy me a bike, so I bought a bike for myself. And the first bike I owned was a vintage bike also. It's a 650cc Norton with a sidecar. And after that I bought a Road King, and it never stopped. Well, it's my dad, of course. He introduced me to it. Dad gave me a AGS 350cc motorcycle. It's a classic. And under strict supervision that I learned to ride this bike around the neighborhood and not fool around. So with that, it took me a while to get used to the weight, try and understand the machine, respect the machine. And along with that, there were a lot more that I learned from him, how to look after your bike. The first time that I ever opened up something was a motorcycle, and this had to be so carefully done. And yeah, this is where it all started. On a bike, you feel at one with the surrounding. You're absolutely at peace, and you remember every aspect of the road, of the terrain, of everything around you. See, for me, I don't look at them as a machine. It all started when I started crawling. My dad got his first motorcycle. It was a Norton 16H with a sidecar. A lot of memories. I remember
getting onto that bike. I was put in the sidecar with my mom, and we would go for these rides, we would go for ice cream. So I remember all this, these memories, can never forget. And with that, over the years, each motorcycle that he picked up, whatever motorcycles that we picked up, I've had a special connection with it and a special bonding, and a lot of memories. Like each bike has a story to tell, so I grew with them, I would say. So Yeah, I accomplished a lot with the bikes in the sense. It was a fantastic journey with them. 22 years, I've had a fabulous journey with them. I met a lot of people, interacted with a lot of people, a lot of like-minded people, and I really enjoyed it. That's all I can say.